As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends, and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver and his mouth became dry. He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically, the whole community, all blood relatives of Arjuna, had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjuna. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjuna's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, but to his soft heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. It is said, therefore, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे मनोरथेना सति धावतो बहिः. One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods, but one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Srimad Bhagavatam, 5th canto, 18th chapter, 12th verse. Let's recite the prayers together. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुझे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्. Hare Krishna. So welcome all of you once again in our weekly Bhagavad Gita discussion. So we are starting this new section today from first chapter, right? पहला अध्याय का हमने चर्चा की थी. सेक्शंस में आचार्यों ने विभाजित किया है पहले अध्याय को या सारे अध्यायों को. तो हम पहले अध्याय में लास्ट सेक्शन में है अभी, एंड द सेक्शन नेम इज अर्जुन विषाद योग. और in simple language, Arjuna's giving 5 or 6 reasons, or 5 5.
So Arjuna's 5 reasons of not fighting. Arjuna is giving these reasons in the further verses from 28 to 46. तो इनमें से 4 रीजंस जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाएंगे और एक रीजन आएगा वो सेकंड चैप्टर में आएगा. दैट इज 2.6. ठीक है. तो नाउ यू कैन नोट डाउन. First reason is reason of compassion. So that reason Arjuna speaks about in verse number 28 to 30. Okay. First reason is compassion, 28 to 30. Then enjoyment, 31 to 35. Then, okay, enjoyment, 31 to 35. Then third reason is fear of sinful reactions. So that goes 36 to 38. Fear of sinful reactions, verse number 36 to 38. Then fourth reason is destruction of family traditions. Destruction of family traditions, verse number 39 to 43. Destruction of family traditions, that is fourth reason, verse number 39 to 43. ठीक है, किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ? Then fifth reason is indecision. Indecision, verse number 2.6. So this last reason comes in second chapter, 6th verse. ठीक है, so compassion, enjoyment, fear of sinful reaction, destruction of family traditions, and indecision. So these are the 5 reasons Arjuna is going to give in his crying in front of Krishna. ठीक है. ओके, तो कंपैशन के बारे में अर्जुन ने 27th वर्स में ही बोला है. द सेक्शन एक्चुअली इज 28 to 46, but 27 में भी अर्जुना हैज not Arjuna but Sanjay, when he is describing the verses to Dhritarashtra, Sanjay has hinted at this compassion, है ना. वो कहां से आता है? Which word we discussed last time? तान समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वा बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निम इदम ब्रवीत. विषीदन इदम ब्रवीत, है ना. तो इसमें कौन सा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि अर्जुना इज बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय कंपैशन? व्हाट इज द मीनिंग? विषीदन, व्हाइल लमेंटिंग. तो वो तो शोक कर रहा है, बट करुणा के कारण शोक कर रहा है, कंपैशन के कारण शोक कर रहा है. वो कौन सा वर्ड से पता चलेगा? कृपया. यस, वेरी गुड. कृपया, कृपया पर्याविष्टो, है ना. कृपया मतलब कंपैशन से, पर्याविष्टो ऑफ अ हाई ग्रेड. पर्याविष्टो परे है ना. सो हाई ग्रेड ऑफ कंपैशन, आविष्ट उससे कवर होकर, विषीदन मतलब अर्जुन रो रहे हैं. पश्चाताप इज नॉट द राइट वर्ड. रो रहे हैं. इदम अब्रवीत, और रोकर ऐसा कहते हैं. ब्रवीत, इदम मतलब ये, ब्रवीत मतलब कहा, राइट. इदम ब्रवीत. And then Arjuna's verse is there, verse number 28. Okay, so there was a homework, right? याद आ गया मुझे. There was a homework. What was the homework? हाँ, so compassion पे हमने डिस्कस किया था, कृपया शब्द पे, that think about compassion. What is the right compassion and what is a misplaced compassion? Example, scenarios, practical. Yes, Gyanendra Prabhu.
Gyanendra Prabhu is saying that Prabhu, we all are sitting here in front of you. That is our compassion to you. Because otherwise, I mean, आपका कुछ हो नहीं सकता है. So मैं पहले से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, thank you बोल रहा हूँ, thank you so much for coming and giving us a chance to discuss Bhagavad Gita, and I'm very grateful for your compassion on me. Yes, this was the example you want to give, right? No, another one. This was the one and another one. ठीक है. एक एग्जांपल है ना कि एक पिता का पुत्र भूख गया है. हाँ. तो उस केस में अगर वो भूख लग रही हो, आपने उसको लेके खाना दे दिया, फिर उसको काम पे लगा दिया, तो इस सब से हम जो कंपैशन दिखा रहे हैं वो है ना टेम्पररी कंपैशन, उससे सब कुछ मेजर फायदा नहीं होने वाला. पर पुत्र को अपने पिता के पास ले गए तो वो अच्छा कंपैशन है. तो एक रॉन्ग कंपैशन है और मतलब मिसप्लेस कंपैशन है जिसका कुछ मेजर फायदा नहीं है. तो एक सही कंपैशन है जिससे कुछ उसका फायदा होगा. ओके, तो इसका मतलब है कि किसी को खाना नहीं खिलाना चाहिए, भूखे को खिलाना चाहिए. प्रसाद देने के बाद काम कर लेना चाहिए. प्रसाद देने के बाद उनको देने के बाद काम से लगा के काम करवाने लगा. हाँ, तो वो हमारा मिसकंसेप्शन. तो उनको रोजगार नहीं देना चाहिए. That is not the thing. अगर बच्चे हैं भूखे लगे तो उनको खिला करके उनके पिता के पास पहुंचा सकते हैं. हाँ, ओके. That is the thing we can do. ओके, खिला पिलाकर पिता के पास भेज दो. पर पिता को पता नहीं है तो क्या करेंगे? कम से कम फिर खिलाएं भी ना. खिलाना ठीक है प्रभु जी, बट लेकिन काम पे लगाना छोटे बच्चों को इज नॉट. छोटे बच्चों को काम पे लगाना ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला गया. प्रभु जी के वर्ड अकॉर्डिंग मेरे से मतलब गरीब पुत्र है, कोई लेकर से 20-21 साल का है, वो ओके, भी बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा नहीं. क्या ना प्रभु, चेंज द स्ट्रेटजी. हाँ, सॉरी. हाँ, बड़े बच्चे तो खोते ही नहीं है. आपके एग्जांपल के चित्रे उड़ गए. Helping someone illegally helping someone or Illegally, what do you mean? You will give them drugs which is not or give them AK-47? which is not authorized. हाँ, मतलब बंदूक दे देंगे उनको. जैसे पेरेंट्स बच्चे को मार रहे हैं तो आप आके बच्चे को बंदूक दे दो, मार दो, आप दोबारा मार right. Illegal helping, but which is not ethically right. Can you give some real scenario? What is this going on? Actually, अगर बोला जाए कि अगर हम जिसको प्रॉपर्ली ज्ञान दे रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे जैसे प्रॉपर्ली दिया जा रहा है हम लोगों की आखिर भगवान क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, गेटिंग टू नो भैया. और बहुत सारे ऐसे बैठे रहते हैं कि वो सिर्फ आपको भटकाते हैं रास्ते पे. एक्चुअली में बोले हैं कि हम तुमको ये बताते हैं वो बताते हैं, बट वो ना तो प्रामाणिक है ना किसी भी तरह से. Okay. मिसलीड करते हैं. So you are talking about spiritual path, an authentic spiritual path or and a non-authentic, non-bona fide spiritual path. But where is misplaced compassion? Give me the examples of misplaced compassion. कि ये व्यक्ति इस सिनारियो, ये करुणा, एक उदाहरण ऐसा दीजिए जिसमें करुणा दिखाई गई है, कृपा की गई है, परंतु उससे उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होने वाला है. जैसे अपन बकरा होता है, राइट, तो बकरीद पे उसको खिलाते हैं. ओके, उसको कंपैशन दिखा, तो हम बकरीद पे बकरा काटते हैं, तो कंपैशन हम दिखा रहे काटते हैं. नहीं, हम नहीं, मतलब वैसे वो हम उसको खिला रहे हैं, कंपैशन दिखा रहे हैं, बट किसको कंपैशन दिखा रहे हैं? बकरे को, बकरे के ऊपर. बाद में तो मिसप्लेस्ड हो गया उसका, मतलब वी आर यूटिलाइजिंग इन अ रॉन्ग वे. छोटे बच्चे या बैगर को जो है उसको खाना वाना खिलाते हैं, उनको अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि बाद में वो यूज किया जाता है भीख मांगने के लिए, बैगर यूज करने के लिए जो हमने. हाँ, तो वो एक तरह से कि उनको यूज किया जा रहा है, उनको तो टेम्परेरी लगा के हम उनको खाना खिला रहे हैं, तो अच्छे कपड़ा पहना रहे हैं, तो फॉर द यूजिंग हमारे सेवा के लिए, बट उनका उद्देश्य कुछ और होता है बिहाइंड दैट, क्योंकि उनको यूज किया जाएगा बाद में भीख मांगने या कुछ अदर. okay, yeah, ठीक है, this is close, this can be considered as a misplaced compassion. I give money to beggar and there is a gang behind it. तो मैं
उसका बेगर का भिखारी की मदद करना चाहता हूँ, परंतु उसकी मदद हो ही नहीं रही है। वो पैसा कहीं और ही चला जा रहा है, एंड ही रिमेन्स अ बेगर, है ना। सो वो मिसप्लेस कंपैशन हो गया, ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स, एनी अदर एग्जांपल? तो बहुत सारे एग्जांपल है। कोई जेल से भागना चाहता है, हम उसकी मदद कर दी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। somebody is trying to commit a crime, उसको सिंपल शब्द में बोल देते हैं। जेल से भागना तो चलो एक हाइपोथेटिकल केस हो जाएगा, परंतु कोई अपराध करना चाह रहा है, और हमने उसकी मदद कर दी, तो क्या हुआ? वो मैंने तो मदद की। कुछ कॉन्क्रीट अपराध का एग्जांपल लेके बताइए ज्ञान दो। तो कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी में कोई प्रॉपर्टी लेके झगड़े हो जाते हैं, और हाँ। एक पड़ोसी मेरा फ्रेंड है, हाँ, अब उसको सामने वाले से अपनी प्रॉपर्टी वापस छीन लेता, हम दोनों मिल करके उसका मर्डर कर देंगे। आज हाँ, so so I may not be knowing that my friend is committing a crime, है ना। जनरली सी पता है मेरा फ्रेंड मर्डर करने वाला है, तो मैं नहीं चाहूंगा शायद उसके पास, उसका साथ नहीं दूंगा, परंतु आई फेवर हिम, आई गिव हिम फैसिलिटीज, है ना। जैसे एक मित्र आया, बहुत घनिष्ठ मित्र है, बचपन का साथी है, पैसे की जरूरत है, 10 लाख रुपए चाहिए, प्रॉब्लम में हूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं, हमने मदद कर दी, और पता चला कि मित्र वो उस पैसे से जाके क्या कर रहा है? जुआ खेल या नशा पान कर रहा है। तो कंपैशन तो है, परंतु क्या है? मिसप्लेस्ड कंपैशन। donation also, without knowing, giving the donation. हाँ, वेरी गुड। Without knowing how the donation money is going to be used, giving donation, supporting somebody's life is a misplaced compassion. Misplaced क्यों बोल रहे हैं हम इसको? The purpose for which the compassion is being shown, that purpose is not even met, है ना? Okay, any other example? There can be many examples, ऐसा ज्ञानेंद्र प्रभु ने बोला है। एग्जांपल है कि मेरा एक कलीग था 5 साल पहले, उसकी किडनी फेलियर हुई, तो किडनी फेलियर हो गया, तो सारा ग्रुप बनाया, जो काम करते थे सबने व्हाट्सएप पे बोला कि हम सब डोनेशन लेंगे, उसका मतलब ट्रांसप्लांट व्हाटएवर, और उसके जस्ट पहले मैंने सबको डोनेशन मांगा था जन्माष्टमी, तो सबने बोला कि कृष्णा को देना जरूरी है या इसको बचाना जरूरी है। मैंने बोला तुम, उसका खर्चा लाखों में था, मैंने बोला तुम 5-5 हजार करके क्या मिलेगा उसका ट्रांसप्लांटेशन फिर भी नहीं, इससे अच्छा आप उसको भगवान का नाम दे, या उसके नाम से तुम मंदिर में दान दे दो। लेकिन सबने उधर ही दिया, पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि इसमें उसका कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला दवाई तो हो जाएगी, मैंने बोला दवाई होगी 10 दिन की, 15 दिन की, तुम्हारे कुछ हजार की, लेकिन उसका क्या होगा? वेरी गुड। तो वो एक, yeah, so every now and then this similar situation will come. For how long we can support somebody, like Anand was giving example ना, कोई खो गया है बच्चा, कितना टाइम तक उसको सपोर्ट करेंगे? उसको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज कब तक देंगे? परंतु परमानेंटली कौन दे सकता है? उसका पिता दे सकता है। So if I do an effort to make this boy reach his home, his father, then things are taken care of for future, for entire life, है ना? So we exert so much in giving material relief to people for a short time, है ना? For a short time for a short time material relief we exert so much, but we don't put any attention towards long term material relief.
How will the long-term materially come? By going back home, back to Godhead, right? So I'll give another example. Animal rights activists. जानवरों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, and this and that, right? And these animal right activists will go for a rally, will go for a protest. After the protest, they will have a party, and in that party, they will have chicken soup. है ना? Misplaced compassion. कुछ हो ही नहीं रहा है, फायदा किसी का उससे, right? They themselves are not able to follow what they want others to follow. So in further verses, second chapter में एक purport आएगा, उसमें प्रभुपाद says that saving the coat of a drowning man. A person is drowning, कोई डूब रहा है नदी में, बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है? And we run and we catch hold of his coat, पकड़ लिया, ठीक है मैं तुझे बचाता हूँ, हाँ, और निकाल लिया बाहर, कोट बाहर आ गया, आदमी डूब गया, एंड हम खुश हो, देखो मैंने व्यक्ति को बचा लिया, व्यक्ति को बचा लिया, व्यक्ति को बचा लिया, है ना? व्यक्ति बचा गया? नहीं बचा, डूब गया। उसी प्रकार when we are trying to fix the problems of the body, somebody is in a problem. Ultimately, what is the body? Body is a material covering over the soul. So we save the body and the soul is drowning in the material ocean. Right? Now I had a colleague, Akshat Sinha, when I was in Delhi. So very enthusiastic about social causes and this and that. तो बताता था हमको, हमसे डोनेशन लेता था कभी कभी चीज में, मैंने कभी दिया नहीं तो कोलीग्स वगैरह से आके एनीथिंग यू वांट टू गिव, 5 रुपए 50 रुपए जो भी है, तो क्या करेंगे पैसे का? तो हम स्लम्स में जाएंगे, दीपावली पे बेचारों के पास पैसे नहीं है, बच्चों के पास, उनको भी त्योहार मनाना चाहिए, तो हम स्लम्स में जाएंगे, बहुत सारे पटाखे लेकर जाएंगे और वहां पर उनके साथ में पटाखे छोड़ेंगे। Okay, what is that? Misplaced compassion. No goal. मतलब बॉडी की भी सेवा नहीं हो रही है उसमें, वो who is getting benefited with this? The पटाखा वाला क्योंकि ऐसे मूर्ख खाएंगे और सोशल कॉज के लिए पटाखे चलाएंगे, तो किसकी जेब में जा रहा है पैसा? भला किसका हो रहा है? पटाखे बेचने वाले का, ना देने वाले का भला हो रहा है, ना पटाखे छुड़ाने वाले का भला हो रहा है, और सबको क्या मिल रहा है? पोल्यूशन, राइट? Also what they used to do, पैसा इकट्ठा करेंगे, और he used to very proudly say this, and he has never given Janmashtami donation. I always follow up with him and always call him for Janmashtami. He came once थोपटे लॉन्च में, लास्ट टाइम जब हुआ था कोविड के पहले, नहीं कोविड के पहले नहीं, लास्ट वाला, हाँ कोविड के बाद का जो पहला हुआ था, इससे पहले वाला लास्ट ईयर. So and father mother are very pious. I have met him. His son was hospitalized for some reason. We went there, gave prasad वगैरह, बहुत अच्छा, नहीं पायस है, बहुत गलत आदतें कुछ भी नहीं है, परंतु कंपैशन डायरेक्शन चेंज गलत हो गया है. So what we do, he said, so on some of the weekends when we have collected the money, we purchase lot of burgers and pizzas from McDonald's, and then we go to the slums and then we distribute to these children, and we also sit with them, eat with them. So who is getting benefited? McDonald's. Right? They will not do अन्नदान, खिलाना ही है ना, अब अन्नदान करो, ठीक है? अन्नदान नहीं करना, you cook, you offer it to Krishna, you feed prasad, that is real benefit for the soul. But see, किधर किधर जाता है misplaced compassion, and how our mind cheats us in the name of compassion, right? So that is what is happening with Arjuna right now.
भाई अर्जुना का कंपैशन, देखो प्रभुपाद ने प्रपोर्ट में लिखा है that a devotee has all the good qualities, and out of the good qualities of Arjuna he is getting compassionate. उनको करुणा आ रही है, ना केवल अपने सैनिकों के लिए, अपने लिए, या है ना इधर पार्टी के लिए नहीं, not only that, for the opposite party soldiers also he is getting compassionate. फिर उनको क्यों मरना चाहिए? Just because I want to win the kingdom, why should they die? Right? So in this context, Prabhupada is not mentioning it as a misplaced compassion. Prabhupada is talking about the qualities of a devotee. Okay? But in the further verses, this point will be clear. कि ये कैसे misplaced compassion है, वो प्रभुपाद उसको भी धोएंगे थोड़ा सा बाद में. But Prabhupada here wanted to speak about the qualities of a devotee. So let's see. Let's do some discussion on that. So Prabhupada says that a devotee has all the good qualities and a non-devotee has none. Very बहुत ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, है ना, और बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है. नाउ टेल मी योर रिफ्लेक्शंस, ट्रू और फॉल्स इन एग्जांपल्स. Prabhu, I have seen some athletes who are very good in nature. They are good athletes. They are good office workers. They are very nice to talk to you. They are very supportive. Except that if they are playing Krishna song, then they will say, "Where is this noise coming from? Could you please reduce the volume?" And their focus is to keep themselves healthy, eat good food, meet with good people, and that's it. Okay, तो ठीक है ना, मतलब it may be noise for somebody. Genuine है, उनको नहीं पता कृष्ण के बारे में. They don't know Krishna is God, devotional life is there, spiritual life is there. When they play something, it's noise to us. They say the same thing. कह रहे इन लोगों को क्या है, कुछ भी नॉइज ही लगता है हमेशा. Focus on the good qualities or bad qualities. I mean, I will not call this a bad quality. I will call this ignorance. Understood the difference? Somebody saying कि कीर्तन मत करो इतना जोर से, it is not a bad quality. It is sheer ignorance on their part. अज्ञानी है. तो क्या हुआ? अच्छा गुण बुरा गुण क्या हुआ इसमें? अभक्त जो है वो वीगन डाइट फॉलो कर रहा है, वो समटाइम्स यू सी अभक्त भी बहुत अच्छे गुणों वाले अभक्त भी होते हैं, और ये डिवोटी है, इसको रात को जाग रहा है, दिन में सो रहा है, अपेरेंटली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, है ना, लेकिन he may have so many issues with his behavior, right? If this side of the class asks this side of the class कि मेरे दुर्गुण बताओ, तो सुबह से शाम हो जाएगी. And vice versa also. This side of the class ask this side of the class. होगा कि नहीं होगा? होगा ना शीतल माता जी, पक्का. So why Prabhupada is saying this? अब जो है वो मटेरियल पे फॉलो करते हैं, मतलब ज्यादा ये अपना स्पिरिचुअली, मतलब मटेरियल उनके लिए सेकेंडरी आता है, पहले स्पिरिचुअली वो लोग वेदर सेंटर में कृष्ण को रोके वो सोचते हैं कि वेदर इट इज वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओके, सो व्हाट, सेंटर में कृष्णा को रखता हूं और फिर ये चिकन को काटता हूं. वेदर ये उनके लिए करना है या नहीं करना, मतलब के लिए राइट है या नहीं, वो मतलब स्पिरिचुअली वो साथ को फॉलो करते हैं सबसे, वो उस वे से सोचते हैं मटेरियल रूप में जस्ट लाइक वो एफर्ट बेकार है, मतलब यही करते हैं मिट्टी के लिए, जस्ट हमारा जो भी है सोली है, और वो उस वे में सोच करके चलते हैं. और अब जो है वो मटेरियल नीड्स पे ही ध्यान देते हैं कि वेदर फिजिकली हो, मेंटली हो,
तो फिजिकल नीड ही उनका सबसे रहता है फर्स्ट प्रायोरिटी। नहीं, see, have you not met anyone who is not a devotee, but he has very nice qualities, very soft spoken, very nice in dealings, uh, honest, truthful, है ना? ये अच्छे गुण है ना? है ना? Not cheating, not in office, work life also we see people uh, who would want to not take anybody's credit, है ना? Be honest, good co-workers. There are people who will follow religiously traffic signals, law of the land, never getting into any disputes. होते हैं ना ऐसे लोग? और ये डिवोटी होता है, उसको वो बोलता है, अरे भागो, गाड़ी का लाल सिग्नल होती है क्या? लाल होने वाला है, लाल पे हम सिग्नल जंप कर देते हैं. Are you getting the question? The question is, a devotee, we see there are so many bad qualities in a devotee, and we see there are good qualities in a non-devotee. But Prabhupada is saying the opposite. Prabhupada is saying a devotee has all the qualities and a non-devotee has none. How do we reconcile these two edges? Getting the question? Question clear हुआ कि नहीं हुआ? किसको clear नहीं हुआ बताइए? Clear हुआ सबको? हाँ, अभी बताइए. हाँ, अभिजीत रू. The same example, no? The point of comparison, like non-devotee will have a misplaced comparison, and the devotee will have a right comparison. Okay, compassion we have discussed. Yeah, that is the thing between different within the both the category. Hmm. He is a good person, but he have got a misplaced comparison, so it's not a fruitful. It will not go in that direction. Okay. But the quality of compassion is a good quality or bad? It's a good quality. It is good quality. Prabhupada is saying non-devotee does not have quality, good quality. Let me read the sentence again. Focus. Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods. Whereas the non-devotee, however advanced he may be in material qualifications, by education and culture, lacks in godly qualities. Okay? And further in one sentence, Prabhupada is saying, the verse, Bhagavatam verse Prabhupada is quoted here, right? One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. ये देवता जैसे गुणों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद. देवताओं के गुण व्यक्ति में होते हैं जो भक्त होता है. तो एक भक्त जो है वो देवता से कम नहीं होता क्वालिटीज में. But one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. Material qualifications की कोई वैल्यू नहीं है ना? हाँ. And this is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. समझ में आया? कुछ हिंट मिला? First line में ये बोला ना, as genuine devotion to the Lord. हाँ. Those we are considering as devotee, right? हाँ. So even if he's breaking the signal, right? हाँ. He's not breaking the going to the temple. Okay. So, all the things. हाँ. हाँ. Because here we are seeing genuine devotion. So whatever he is doing. So if I have genuine devotion to the Lord, the law of the land will not apply to me. Material law, it's a second. Should I follow the material laws or not? It may be second priority compared to our spiritual goal. Right? So that we can sacrifice on the what we call there is a higher what we call goal. And so yeah, correct. So that we can compromise for the higher. You told last time on Sunday. अच्छा, आपने बताया था. आपने बताया था. हाँ, मतलब फिर ये सारे भक्त साल भर में जेल में पाए जाएंगे. मॉर्निंग प्रोग्राम जेल में होगा. See, okay. Let me give you another hint. See, as a practical application.
एप्लीकेशन है। इस तरह से भगवत गीता को स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना होता है। भगवत गीता पढ़ लिया सब मैंने, हो गया मेरा, ऐसा नहीं होता। हाँ, give me an example from scriptures or from history of this world where a person was apparently a very good person, very qualified person, but later he was implicated, he was found implicated in bad things. last time Ajamil, okay. क्या बताइए? हाँ, so what is the example? Good, right? Durvasa Muni was Good. Good. Later, he did some. okay, okay. दुर्वासा मुनि को कटघरे में ला रहे हैं, ठीक है। So complete your sentence, na? The activity which he has done right, which was not right. Durvasa Muni has done some activity. No, he was good, he was pious, right? But later he has done the aparad, the Vaishnava. हाँ. So what do you want to say? Conclusion क्या है? Question क्या था? Question क्या था? Tell me an incident from the scriptures or from a modern history of this world, which is not mentioned in the scriptures, where a person is found to be very good behavior or very qualified materially, but later he is found to be guilty of doing something bad, something wrong. So the same for this Durvasa Muni, हाँ. he was very good, right? हाँ. Later he has done aparad for the Vaishnava. हाँ. So till the time he was received, he was welcomed by Ambrish Maharaj, he was behaving very nicely. He's a rishi, he's a muni, Durvasa Muni. But as soon as he had a misunderstanding of Ambrish Maharaj committing an offense to him, he immediately becomes angry, and then he produces a Rakshas to kill Ambrish Maharaj. है ना? एकदम से पलट गए, दुर्वासा मुनि का बिहेवियर ऐसे चेंज हो गया बिल्कुल. Why? Anger, हाँ ना, तो क्रोध आया उनको, and he forgot that why is he here for, what is this, what is right, what is wrong. Why? Because Durvasa Muni is not a devotee. नहीं, पानी अलाउड नहीं है इधर भी. Okay, another example. हाँ, what is the example? Bhishma Pitama, how Bhishma Pitama has bad quality? But he had taken a vow, na? He had a duty towards the king. तो वो तो खुद ही गिल्टी फील हो रहे थे, उनको आप गलत नहीं ठहरा सकते. वैसे he did not have, so he was not siding with Duryodhana and party because of his bad calculations or bad quality. He was bound by the vow he had taken. But Dhritarashtra is not even an example for a good person. I mean, we are asking about an example of a good person and then displaying bad qualities. कर्ण का एग्जाम्पल है इस मंथ से. Okay. So in that sense, उसके good qualities भी they converted into bad qualities. Apparently, they were not useful to him. Have you heard this description of Kamsa carrying or driving the chariot of his sister Devaki after the marriage? The Kamsa apparently is taking a very humble menial position. कृष्ण सारथी बने, उसके पहले कंस सारथी बना था, है ना? ये हम्बल जॉब जो है सारथी बनने का, कंस ने भी किया था कि मेरी बहन, मुझे इतना प्रेम है मेरी बहन से
कि आज उसका विवाह होने वाला है, उसकी विदाई हो रही है, तो मैं ड्राइवर बनूंगा उसके लिए, है कि नहीं? वो ड्रामा में माताजी वाज देयर ना, देवकी, and the way he was behaving, everyone was wonderstruck. Here comes so much love, such a nice gentleman comes, इतना सुंदर, इतना मधुर व्यक्ति, इतना अच्छा स्वभाव. It is divine. To be humble is a divine quality, है ना? परंतु जैसे ही आकाशवाणी हुई, वैसे ही वो डेमिगॉड से डीमन बन गया तुरंत. So this is a non-devotee, and that is why Prabhupada is saying that a non-devotee does not have any good quality. हाँ. So let's not take that example, because she is mother of Lord Ram, and that's a leela which is going on. That example is given in the context of association. How should we be very careful about the association we take? That the devotee also exhibits does these kind of mistakes, but she is a devotee. So if she is a devotee, because she is mother of Lord Ram, she has all the qualities as per Prabhupada. Right? We are discussing about non-devotees. We've heard about people on इसको खुला ही छोड़ दो बच्चों के आने जाने के लिए, सिर्फ ये वाला लगा इसको, बिकॉज आवाज आती है. Now every now and then we get news of big people, industrialists or leaders falling down due to their whimsical desires. For example, this Bill Gates का केस हुआ था. नहीं, sorry, Bill Gates नहीं, क्या? Bill Clinton, right? I mean, Bill Clinton was such a president of the United States. He won 2 elections, and he would have won third election also. And actually, in the US, you cannot contest for third time. You can only contest for 2 times. है ना? And the American people, they were ready to change the law so that Bill Clinton can fight elections third time and become the president. He was such a charismatic and honored leader. America was ready to give third time throne to Bill Clinton, और उसके लिए वो laws भी change करने को ready थे. But then he was found implicated in this case with Monica Lewinsky. Right? So apparently very good person, all great qualities, but a non-devotee, when he will change, when he will fall down and start exhibiting demonic qualities, you cannot ascertain, you cannot imagine. है ना? टाइगर वुड्स का एक केस हुआ था. golf player, world's richest player across any sports, and such name and fame. Golf, I mean, nobody is even close to him, but he was implicated in similar case, and then gone. Big industrialists, big businessmen, lot of money, a business empire, and then they would divorce one wife, they will marry another, they will divorce the second wife, they will marry another. This will go on. So what kind of good qualities are there? Right? So that is the answer. Apparently there may be a non-devotee who has good qualities, but there cannot be, you cannot ascertain. आप उसका कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये कब क्या होगा, इसका ये कब बदल जाएगा व्यक्ति, कुछ पता नहीं. But a devotee apparently may be struggling with these anarthas, because
because we are not pure devotees, we are sadhakas. So we may have bad qualities. However, when a devotee will eventually get rid of the anarthas and develop good qualities and become a godly person. Right? Now, Prabhupada went to the US, preached to the hippies. What were their qualifications? What were their qualities? They were taking drugs multiple times in a day, not taking even bath. And these devotees, because they were devotees, because they were practicing Krishna consciousness, became high order of sannyasis. That was the meaning Prabhupada wants to say. The devotee has good qualities. They are covered right now, they will be uncovered tomorrow. If the devotee remains fixed upon the path of Krishna consciousness, they will develop all the good qualities. But a non-devotee, however good qualities he may have, can anytime change. Right? There was a person called Crazy Peter. When Prabhupada used to preach in the America in the initial days, Crazy Peter. वो Crazy Peter क्या था? वो धुत रहता था हमेशा नशे में, हमेशा धुत. और वो कब लास्ट टाइम नहाया था उसको भी नहीं पता और किसी और को भी नहीं पता, है ना. तो प्रभुपाद क्लास देते थे तो ये आ जाता था और बैठ जाता था. तो सब लोग उसको दूर भगाते थे, अरे क्योंकि बाकी लोग भी नहाए हुए नहीं थे, बाकी सब भी हिप्पी थे, पर बाकी हिप्पियों के लिए ये लोअर स्टैंडर्ड हिप्पी था. है ना. तो ये हिप्पियों में भी इतना बुरा केस है इसका कि हिप्पी भी उसको नहीं सहन कर पाते थे. सो एवरीबॉडी यूज्ड टू पुश हिम अवे, गो यू स्टिंक. ऐसे करते करते प्रभुपाद उसको अपने पास बैठा दे, यू सिट हियर एंड देयर आर फ्लाइज ऑल अराउंड हिम. मक्खियां फिर बनाती थी उसके आसपास, उधर बैठता था. धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. ही वाज इनिशिएटेड विद द नेम कुशाकृत दास, and then he translated so many of संस्कृत लिटरेचर बाय द गोस्वामीज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके सबके लिटरेचर को उन्होंने संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया लेटर. See this transformation. So devotee has all the good qualities. If we are able to see some bad quality in a devotee, let's say if we see that, oh, this devotee has such bad quality, that bad quality will not remain for long. Let us understand this point. Okay, maybe there, because bad qualities are coming from where? They are coming from our past karmas, past impressions, है ना, past life. So सर्वैर गुणेश तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा. एक अभक्त में क्या क्या बड़ा गुण होगा? मनोरथेना सति धावतो बहिः. ये मन के रथ पे भाग रहा है, ये कब तक अपने अच्छे गुणों का पालन करेगा? मन के रथ पे जो भाग रहा है, भागवतम में कह रहा है कि क्या अच्छे गुणों का पालन करेगा. प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप इनको पढ़ा रहे हो, इनको प्रीच कर रहे हो, अंग्रेजों को, हिप्पियों को, इतने दुर्गुण हैं इनके अंदर. मैं एक पोस्टमास्टर थे, ये पोस्टमास्टर जो मिलने आए थे प्रभुपाद से. सो ही इज चैलेंजिंग प्रभुपाद, कह रहे हमने बचपन से कभी मांस छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं है, हम इतने पायस परिवार से आते हैं, धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये सब करने की आवश्यकता क्या है? क्यों आप 16 माला का जप करो, ये इतना सारा आपने प्रोसेस लगाया है. समटाइम्स पीपल से, यू नो, श्वेता वाज लास्ट टाइम इन हर होम टाउन, तो उन्होंने थोड़ा डिवाइस वगैरह प्रोग्राम, इनिशियल प्रोग्राम्स वगैरह लिए थे. सो somebody made a comment कि प्रभुपाद ने ना बहुत कठिन बना दिया है भक्ति का पाठ. ये भक्ति ऐसे थोड़ा ना होती है, भक्ति हृदय से होती है, मन से होती है. क्या है 16 माला जप करो, भोग लगाए बिना खाओ मत, लहसुन प्याज नहीं खाना, चाय नहीं पीना, ये इतना सब कठिन क्यों बनाना चाहिए भक्ति को? हम तो देखो सब करते हैं, परंतु हम भक्ति भी करते हैं. You hear this?
these things, है ना? So this postmaster is asking प्रभुपाद की सब करने की आवश्यकता क्या है? इतना अच्छा जीवन हम जी रहे हैं, हमारे परिवार संस्कारी है, बच्चे हैं घर में, अच्छे संस्कार फॉलो करते हैं, सुबह शाम रोज आरती होती है, ब्राह्मणों की का आदर होता है, गौ माता की सेवा होती है, सब अच्छे से हम कर रहे हैं। क्यों कृष्ण भावनामृत क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए? तो प्रभुपाद जो है वो आचार्य हैं, इसलिए वो आचार्य हैं। जो उनका उत्तर है ना, तो प्रभुपाद कोटेड दिस वर्स कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे गुण है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी पत्नी के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर, सब बहुत अच्छे गुण हैं, परंतु वो अच्छे गुण कब तक चलेंगे? हाँ, हराव अभक्तस्य कुतो महत्गुणः, प्रभुपाद कोटेड दिस that you are running on the chariot of your mind. अपने मन के घोड़े को और बैठ के तुम दौड़ लगा रहे हो, कब तक करोगे? अच्छे गुण का पालन कब तक करोगे? What is the benchmark? What is the guarantee that tomorrow you will not leave these principles? Your generations down the line will not leave these principles. What is the guarantee? So unless Krishna consciousness is there, there is no guarantee. So you have to become a devotee. If you want to be called a good person, for that also becoming good devotee is required. There is nothing called as a good person in this world who is a non-devotee. अभक्त जो है वो कभी अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, और जो भक्त है उससे अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता. That is what Prabhupada is mentioning. Any questions? Only why it is like a non-devotee will not become a good. Why it is so, you know? That's what the answer is given here. This is because, and this is the answer, because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. कभी न कभी तो माया के प्रभाव में आएगा और माया का जो चमक है ना उसके पीछे पड़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से पढ़ा लिखा, कल्चर्ड है, सब कुछ है, परंतु अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया, लेट्स से फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, एंड दिस पर्सन इज ऑन अ गवर्नमेंट ड्यूटी एंड समबडी ऑफर्स अ ब्राइब, व्हाट प्रिंसिपल विल ही फॉलो? What is the principle now? Whether to accept this or reject this? I will accept because I have to protect my body and my family. What is the higher dharma there? कोई higher dharma है ही नहीं. For this person, the higher dharma was to live a good life and take care of self and the family. That is the highest dharma. And because of this highest dharma, when I am sick and doctor tells me that you should eat eggs or you should eat chicken, then I eat chicken because I have to become healthy. There is no higher dharma there. है ना? व्यक्ति में बहुत अच्छा हूं, परंतु भी नीड है तो करेंगे. प्रिंसिपल कहाँ है? पर भक्त को प्रिंसिपल समझ में आता है. हायर प्रिंसिपल क्या है? कृष्णा हैज सेड नो किलिंग. So no killing. Whatever resources are there, Krishna has given vegetarian resources, I will use. नहीं तो नहीं. Yesterday I had sent this the audio clip, है ना, इजराइल वाले वो डिवोटी का. Now a normal person in Israel, and everybody is under the war scenario ना, किसी को भी मौका मिलेगा कि वो देश से बाहर निकलो तो निकलेगा ना. पर भक्त क्या कर रहा है? भक्त बोल रहा है कि बूढ़ा होके सड़के मरने की बजाय मैं इधर भगवत गीता का प्रवचन करते हुए मेरे साथ में जो भक्त लोग हैं उनके साथ में मैं बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाऊं. What the platform on which devotee thinks is a different platform, and that is why a devotee is unparalleled. When Srila Prabhupada, when the Second World War was going on, Srila Prabhupada was in Kolkata, है ना, and he sent his family to his wife's home
है ना? But he alone stayed there because he wanted to practice spiritual life. उनको ग्रंथ लिखने हैं, सब लिखने हैं. वो तो उस समय में गृहस्थ जब थे तभी चालू कर दिया था ना उन्होंने. तो बॉम्ब की आवाजें आ रही हैं. प्रभुपाद क्या कर रहे थे उस समय? कचौरियां तल रहे थे राधा गोविंद जी के लिए. And people are asking him, leave from here, you will die in the bomb blast. So what's the big deal? Even if I die, I will die while frying kachoris for Radha Govind ji. I mean, that is the success of my life. What else do I need? Dying while performing seva, I mean, that is the epitome. That is the epitome of living, I mean, how to leave the body. Right? So the devotee thinks on a different plane. उसका principle, उसका सिद्धांत अलग होता है. And those qualities are called godly qualities. है ना? So because a non-devotee is always running on a material chariot of his mind, and mind is attracted to all bad things. Mind is attracted to material energy. Right? There is a statistics. Not able to recollect right now. So, if we see the data of the Western countries, the rate of divorce. So why the divorce is happening? क्योंकि मन के रथ पे भाग रहा है ना? मन एक जगह अटका, फिर उग गया, अभी दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए. So there was a cartoon printed in New York Times, that this is one lady is there and one man is there. They both are talking, and oh, it is such a nice day today. My children and your children are playing with our children. किसको समझ में आया? किसको नहीं आया? मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं. कितना अच्छा दिन है आज. And they call themselves developed country. What development they have done? Development in the divorce cases, development in the drug cases, development in killing, development in producing more and more meat, more, killing more animals. If we talk to, we work with multinational companies and we have colleagues, citizens of those Western countries, they will talk values. They will talk honesty and everything, right? Discipline and cleanliness and whatnot. If you go to the US and come back to India, एकदम से इंडिया ना गंदा दिखने लगता है. गंदा लगता है, कितना गंदा देश है ये, क्योंकि वो इतना साफ है, वो उतना साफ सुथरा है वहां पर. ऐसा मिट्टी है ही नहीं, रेत कुछ डस्ट है ही नहीं. सड़क पे आप शूज लेके चलो, वो शूज गंदे थे वो साफ हो जाते हैं. And the people, they are disciplined in their work. 8 o'clock they will come to office, 4 o'clock they will leave, they will take care of their assignments. अगर किसी प्लम्बर को बुलाया है, पैसा दिया है, आप नहीं हो, प्लम्बर बराबर अपना काम करके जाएगा. यहाँ पर पैसा दे के पहले बुलाना पड़ता है और फिर भी वो करके ठीक से नहीं जाता, फिर भी 2 फॉलोअप लगते हैं उसको. टाइम दिया है, टाइम पे आता नहीं है. राइट? So many good qualities they have, such nice system they have, but then why they are unhappy? Because everyone is running on their material plane. This entire country is running on the chariot of the mind. क्योंकि highest principle is to take care of oneself and the family. बस, that is the highest principle. उसके आगे कुछ भी नहीं है. Right? Okay, I think we have overshot the time once again, है ना? ठीक है, so we have covered verse number 1.28 today, and we will continue further discussing from the next week.
Prabhuji, Yes. sometimes in office the colleagues are very nice because they Hmm. are going on breaks and sometimes they are much better than the devotees. So devotees कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं हमारा है तुम्हारी की नहीं हाँ तो यात्रा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं सब्जी कटिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इससे अच्छा लगता है कि इन लोग के साथ है ना, अभक्तों के साथ रहो, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, शांति है लाइफ में। भक्त हमेशा परेशान करते रहते हैं, चलो आउटिंग पे चलो, चलो सब्जी कटिंग में चलो, आपकी बात कर रहे हैं। हाँ, so what is the question? तो कभी भी sometimes इस तरह अपने मन को समझाने के लिए वो जिस एप्लीकेशन रहना चाहिए ऑफिस के ऐसे कम करना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है ऑफिस वाले बोलते हैं कि हम लोग पार्टी में जा रहे हैं हमारे साथ चलो हाँ जब बात होते हैं सैटरडे सर ये लोग इतने अच्छे उनके साथ जाना चाहिए हाँ वो कौन सा होता है हाँ, तब हमें क्या करना है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? विशाल ग्रुप कॉल करना चाहिए। विशाल बोलेंगे अरे अकेले मत जाना, मैं भी आता हूँ। कभी समटाइम्स इसके डिवोशनल यात्रास वगैरह देहू वगैरह क्योंकि पड़ोसी का बर्थडे है दे आर वेरी नाइस टू अस So that is called misplaced compassion on oneself, है ना, कि मैं बहुत करुणा कर रहा हूँ अपने ऊपर कि इतना क्यों करना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए बाजू वाले का। सी, हमको दुनिया के ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज उतने लिमिट तक निभाने हैं जितने लिमिट तक मेरी भक्ति पे प्रभाव ना पड़े, ठीक है। सो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज आर देयर, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं किसी के, वो फुलफिल करने के लिए अब डिवोशनल सर्विस छोड़ के फुलफिल करना है, मतलब मिसप्लेस्ड कंपैशन हो गया। My devotional practice goes on, that standard does not come down, and whatever I have got extra time, I take care of the other occupational duties. That is good, but not at the cost of my chanting, my association, my satsang, my program. No, because they will not leave their Goa for your Janmashtami, will they? No, but I am ready to leave my Janmashtami for their Goa. होता है ना, अरे कैन यू प्लीज ड्रॉप मी समवेयर, आई एम इन ट्रबल, मेरा कार खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ कीजिए, हेल्प करना चाहिए पड़ोसी का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रिंगिंग हिम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। या मैं उतना करता हूँ, उसको भक्ति में खींचने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद है ना, उतना ही करो। अगर पता है कि नहीं खींच सकता ना, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपको भी ले जाएगा, नहीं तो आप छोड़ने जाओगे ना उसको, वापस आ नहीं पाओगे। इट्स अ crude example, you understood? And being with office colleagues and going to office party, networking वगैरह, it is important, it is important, but at the same time again, is my devotional service getting hampered? If yes, तो कुछ फायदा नहीं होगा उसका। When I say no to Krishna and yes to something else, that something else will not be useful for me anyway. Will it be useful? In what way will it be useful? Because if my networking is going to help me in my job, I mean, networking is not more powerful than Krishna. Right? Let's understand that point. Who is the most powerful entity in this world? Krishna. So if Krishna is not able to take care of something, let's say in my life, तो networking से कुछ नहीं होने वाला, ऑफिस पार्टी जाने से कुछ नहीं होने वाला। So do I not go to the office party? Yes, I go, but I don't compromise on my eating standards. I go if the program is not there. So last Friday program जब हुआ था, right? हमारा बड़ा पार्टी था ऑफिस का, मतलब बड़ा पार्टी था ऑर्किड होटल में, और लाइक शाम को 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक धमाधम खाना पीना, म्यूजिक एंड एवरीथिंग, है ना। So I kept on saying to my team, hey guys, come on, let's party, ये go, चलो चलो आना है, कंपनी पार्टी रखा है, सोशल जरूरी है, चलो टीम बिल्डिंग के लिए वो। I kept on saying it, and in front of Krishna I am saying this. I kept on saying this till 4 o'clock, 5 o'clock, and then I dropped a message.
Oh, I'm so sorry, I cannot come. I got something else. I did not go. I pumped my entire team to go. चलो चलो क्या पहन के आए, कुछ तो थीम ड्रेस रखा था, हवाईयन पार्टी एंड यू नो थीम ड्रेस वगैरह। मैंने सब पूरा माहौल बनाया टीम के अंदर कि हाँ चलो क्या पत्ते वाला फूल वाला शर्ट पहन के आना है वगैरह। मैं भी पहनता हूँ, पूरा माहौल बनाया। जिनके पास में नहीं था उनसे खरीदवा दिए। एंड पीपल आर कमिंग, हैट गॉगल्स एंड ये वो, गर्ल्स बॉयज। बट माय फ्राइडे क्लास इज देयर बॉस, ठीक है। So at 4 o'clock, नहीं anyways they were, उनको क्या करना था, वो थोड़ा ना प्रोग्राम में आने वाले थे, है ना। तो बट आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज। एंड अगर मुझे जाना पड़ता भी तो मैं जाके 1 घंटे में वापस आ जाता, बिकॉज आई विल नॉट मिस माय फ्राइडे प्रोग्राम फॉर दिस रबिश पार्टी, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, उसको स्मार्टली निभाना होता है। तो मेरे टाइम घर में रिलेटिव्स हैं, इन लॉज हैं, कोई आया हुआ है तो मैं प्रोग्राम में नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। नो, माय एसोसिएशन, माय वीकली क्लास is my minimum dose which I need to remain in Krishna consciousness. If I don't take the dose, I'm gone for a toss. मेरा spiritual life गया। ये बहुत सीरियस है पॉइंट। हमको लगता है एक क्लास में नहीं गए क्या होता है, बहुत कुछ होता है। एक क्लास में नहीं जाने से बहुत कुछ होता है, क्योंकि एक क्लास में नहीं आने से कितने जन्म हमारे आगे प्लान हो गए हमको पता नहीं है। It is very serious business. Spiritual life, Radhanath Swami Maharaj says, it is like walking on a razor's edge. एक तलवार की धार पे चलने जैसा है स्पिरिचुअल लाइफ। उसमें मिस्टेक करेंगे तो वी बिलीव हमारा ही खून निकलेगा, और तो हम उसको लोएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं। क्लास में जाना, टाइम होगा, सब कुछ जब परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, देश में सब जब अच्छे से हो जाएगा ना, when this world has become a beautiful place, then I will go to the class as if I am the catalyst, as if I am making this world a beautiful place. And the world will become a beautiful place when I am out of this world. Because the person who is making this world a miserable place is me. Please understand the point. ये संसार बहुत अच्छा है, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, मैंने ही आके खराब किया है इसको, ठीक है। So unnecessary duties and this pressure on oneself is not required. Set life in such a way that those things are important for a human life to be done. So we do it without hampering our Krishna consciousness. Similarly, जैसे कि हम अपने जॉब के ऊपर कभी कुछ प्रेशर नहीं आने देते, कुछ आंच नहीं आने देते। कुछ भी होता है फैमिली में, परिवार में, हेल्थ में, एक्सीडेंट होता है, किसी के हाथ पैर टूटते हैं, किसी का बच्चा बीमार होता है, किसी का माँ बाप बीमार होता है, कुछ भी होता है। कभी भी किसी के, आपने सुना है कि किसी ने जॉब छोड़ दिया, घर पे बैठ गया है, या एक्स्ट्रा छुट्टियां ले लिए हैं? कभी हुआ है क्या ऐसा आज तक? बताओ मुझे। जॉब में नहीं होता, केसी में क्यों होता है? दिस इज सीरियस बिजनेस। कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा सर्जरी हो जाता है, मान लो परिवार में किसी का, व्यक्ति 1 दिन का छुट्टी लेगा, 2 दिन का छुट्टी लेगा, वापस जॉब पे आएगा, आएगा ना। तो केसी में क्यों? we stop chanting, we stop going to the program, we stop offering bhoga to the Lord, we start eating unoffered items, and then we increase our karma business. All compromise happens with spiritual life, none with material life, है ना। So that's a reflection. बुरी दुनिया में बहुत अच्छे क्वालिटीज होंगे, परंतु वो अच्छे क्वालिटी मुझे बाहर से नहीं आएंगे। नॉन डिवोटीज के साथ में एसोसिएट करके अच्छे क्वालिटीज हम नहीं सीख सकते, बिकॉज दे आर नॉन डिवोटीज। दैट मटेरियल attraction will also come, even if I say कि हाँ चलो
somebody is very good in time management, non-devotee, let me learn time management from this person. Good quality apparently, but with this time management, if I try to learn from that person, material desires will also come. Okay? So we find good examples, good qualities to follow among devotees. A devotee who is very good in time management, we serve that devotee, we develop that quality. That is a spiritual principle. Any quality, good quality I want to learn, I catch a devotee and I serve menially, humbly that devotee. Krishna will impart those qualities into me. Simple. Somebody is committed, devotee, high commitment. Somebody is a very good book distributor. Just serve that devotee. Just serve that devotee. कुछ नहीं. उनके लिए आसन लगाया, उनके लिए मीनियल सेवा किया, या जो उन्होंने बोला वो कर दिया. उनके हृदय को अच्छा लगाने वाला काम कर दिया. वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाते हैं. कितना सिंपल है ये. किधर मुझे जाना है ऑर्किड होटल में एसोसिएशन लेने नॉन डिवोटीज का अच्छे क्वालिटी डेवलप करने के लिए, राइट? And similarly, then Krishna is like a storehouse of all the qualities. 64 qualities Krishna has. That is the highest, right? Total मिला के 64 qualities होते हैं. We serve Krishna, we develop Krishna qualities. That is why demigods are demigods, Devata, Devagun, because demigods are serving Krishna. So they develop good qualities. A jiva can develop 50 qualities. That is Brahmaji. A jiva can become Brahma, ultimately that is the highest. A jiva can go, Lord Brahma has 50 qualities. All those 50 qualities a jiva can develop. We look at pure devotees like Maharaj, अभी शंकर दास गरी महाराज आए थे, राधा स्वामी महाराज हैं, लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, Prabhupada. On the Srila Prabhupada Vyas Puja, BCC released series of videos on the qualities of Srila Prabhupada. And look at those qualities. You see any pastime of Prabhupada, so many qualities. Prabhupada is. So we serve Prabhupada, we will get those qualities. Why do I need to go with these karmis? The karmi should get inspired from me to develop qualities in themselves. Not the other way around. There is nothing in a non-devotee for me to learn. Right? Okay. Short question, long answer. Any other? We end today? Yeah. We can do as one more. Extended question. So February, for example, yatra hai night meeting, and then at that same time, अगर बच्चों के एग्जाम होते तो हम उसको स्किप कर सकते हैं यात्रा को, लेकिन अगर किसी रिलेटिव की मैरिज है और बहुत ही क्लोज है, छोटा भाई या फिर बड़े भाई का बेटा, तो इस केस में ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ. So what is difficult? डेट क्लैश हो रही है. डेट क्लैश हो रही है. एक ही जगह जा सकते हैं. हाँ. So मायापुरी कॉम्प्रोमाइज होता है फिर उसमें, है ना? हाँ. Because family is important and Krishna is not important. Because at one time only one person become important, na? So see, good question, Yangu. I'm just putting you on the spot. I'm not blaming you or anything, right? See, we need to learn. This is the thing to learn in the spiritual life, to balance. है ना? It is not one or the other. Both can happen. है ना? Now the family should understand that he is a committed devotee. He will not shake, whatever it is. ठीक है? Once they understand that, they stop putting pressure. But I have to exhibit that. I have to show that by my example. है ना? And not in this scenario, but in my life before this scenario comes. In general, in my devotional service. जब पता चल जाता है ना फैमिली को कि ये पक्का है, उसके बाद में वो एक्सपेक्टेशन अपनी कम कर देते हैं. पहली बात. Still, it is my duty to attend very important functions of the family. Because otherwise, it's a disservice to Krishna because I set bad examples. कि ये तो इस्कॉन वाले हो गए, ये तो भक्त बन गए, इनको तो मतलब ही नहीं है, तो परिवार छोड़ दिया, है ना?
ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन वी आर इंक्रीजिंग देयर एनवी टुवर्ड्स कृष्ण। तो क्या होगा, वो हमसे विमुख होंगे, भगवान से भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बैड एग्जांपल सेट कर दिया कि हाँ भक्त बन गया ना मतलब शादी में नहीं आते। And the yatra is important because if I don't go to the yatra, annual yatra, my annual, the rejuvenation, the spiritual vibrations which I absorb in the yatra, I will not be able to do that. तो मेरा एक साल गया। Yatras are very important in the spiritual life, है ना? तो क्या करेंगे, एक दिन 2 दिन के लिए शादी में जाएंगे और यात्रा में भी, ठीक है? फिर उसमें ये नहीं हो सकता कि अरे 7 दिन की यात्रा थी, 3 ही दिन तो हमको मिल रहे हैं, क्या फायदा? नहीं, फायदा है। हम ये मेटेरियल कैलकुलेशन लगा देते हैं वहां पर, इसलिए हमारा इधर दिस और दैट होता है। मटेरियल कैलकुलेशन, सी अटेंडिंग मैरिज इज नॉट फॉर माई सेल्फ, इज फॉर द फैमिली, बट अटेंडिंग यात्रा इज फॉर माई स्पिरिचुअल लाइफ। बोथ हैव टू हैपन, बोथ हैव टू हैपन, सो बोथ हैव टू। उसमें मटेरियल कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे। फिर अगर फ्लाइट पकड़नी पड़ रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा टोल हो रहा है, बॉडी पे एक्सर्ट करना पड़ रहा है, भागा दौड़ी हो रही है, तो होने दो ना। व्हाई आर वी इन दिस वर्ल्ड देन? मतलब भागदौड़ तो होगी ही ना। बट दैट इज द चॉइस आई मेक एंड आई शो माई कमिटमेंट टू कृष्णा। कृष्णा, ये सिचुएशन आया ना, आप लेके आई ये सिचुएशन मेरे लाइफ में, ठीक है, आई एम अंडरगोइंग दिस सिचुएशन, बट आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू ओनली एंड आई कम टू यू ओनली। You are my shelter. So you please enable this plan for me. You please help me in this plan. And I'm telling you from my heart, personal experience, that these are the tests to test our bhakti. What do we choose? Krishna or Maya? ठीक है? अब आप बोलोगे प्रभु जी आप फैमिली को माया बोल रहे हो, मैं फैमिली को माया ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसी माया है ना, उसमें पढ़ के निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, एकदम से कुछ फैमिली की तरफ से आता है, कोई रिलेटिव आता है या हम जाते हैं, वो माया है। वो ऐसा वी सिंक इनटू दैट माया, कमिंग अप वंस अगेन इज अ ट्रबल। सो दिस इज अ टेस्ट। इन दैट आई मीन, if I am in 3rd standard and I am given a test to pass, of course test is given for what reason? To pass. I mean, I should pass the test, right? If I'm in third standard, I am given a test and I fail that test, I don't go to the yatra. I'll attend the wedding ceremony. I fail the test. So what will happen? 2 साल बाद, 4 साल बाद, unless I progress, unless I study, unless I make myself qualified to pass the test, can I go to the 4th standard? Can I go to the 5th standard? So what do? I have to pass the test still. So what happens? The same test comes again. Only the date of the test changes. I have to still pass the test. Same test will come. Once I clear that test, the same test will not come because I have passed the test. Understood? So situation अगर कोई आ रहा है ना ऐसा लाइफ में, we discuss with senior devotees, we discuss with Prabhuji, we discuss among devotees, क्या करना चाहिए, how do I tackle this situation? ठीक है? Once I tackle that situation in a Krishna conscious way, I have passed that test. Now that test will not come again. I am free. Can you believe? Can you imagine that I am free of that situation forever? फिर से कभी जिंदगी में आपका यात्रा और कोई शादी क्लैश ही नहीं होगा। अब देख लो, क्योंकि भगवान को पता है रही है, तो इसके लिए अभी बाएं हाथ का खेल है, ये दोनों मैनेज कर लेगा, मेरे को पता है, तो क्या करने का। Another example I will give it, a little bit extend, but same, आज प्रसाद नहीं है। huh? How many times it happens with us that we have not finished our 16 rounds of chanting and night has a night, रात हो गई है ना? अभी क्या करें? आज का 16 माला जब तो नहीं हुआ है, 10 माला बाकी है, मान लो, हो सकता है कभी कभी, राइट? रात को 12 बज गए हैं, 1 बज गया है, क्या करेंगे?
गिव मी द सॉल्यूशन. अगले दिन 26. ओके, मुकेश प्रभु इज सेइंग अगले दिन 26 कर लेंगे. एनीबॉडी एल्स? कंप्लीट करके ही सोना चाहिए, वही करेंगे, कुछ भी हो जाए 16 करके ही सोएंगे. ओके, और कोई बीच का रास्ता? शैली माता जी want to say something? करके सोएंगे. माताएं बहुत पक्की हैं भक्ति में. और बाकी प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, I cover the next day. Okay. Anybody else? जी ऑलमोस्ट लगता है 2 वीक से हमारा ऐसा ही हो रहा है कि हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं. तो we do after 10 o'clock to 12 o'clock at night. लेकिन हम लोग करके ही नहीं सोते. ये फिक्स हो गया जब से लोग शिफ्ट हुए ना. ये 2 चैंटिंग का टाइम शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट होने का. तो प्रभु जी एंड माता जी, धीरज प्रभु एंड माता जी, they have shifted in Rajveer Palace only, H building. Very sincere, I mean, you know, devotees, very senior devotees actually. They have been attending program since when? When? 2000? अनुपम प्रभु के यहाँ से चालू किया था ना आपने? 2014 धीरज प्रभु had joined, and then after that you got married, right? Yeah. So you always see them in the temple. So you will see them now in the program. They already attending. अभयगोविंद प्रभु एंड भवेश प्रभु का घर पे इधर प्रोग्राम होता है संडे को. बट प्रभु जी संडे को तो प्रोग्राम होता है, सैटरडे को कुछ होता ही नहीं है, तो हमको सैटरडे को भी आना है. So then so they have covered, I mean, Bhagavad Gita में I think you are ahead, right? नहीं अध्याय से नहीं हुआ है. अच्छा. मेन जो जितने श्लोक थे ना हाँ. वो कवर कर स्टार्ट. Okay. ठीक, coming back to the question. So, see, this is an exam again. This is a test. कि माला बचे हैं. हरे कृष्णा. You want to say something? You want to say something? So, I was saying कि ये टेस्ट है कि माला मेरा बचा हुआ है रात तक. अभी मैं क्या करूं? गुरु महाराज ने बोला है 16 माला प्रतिदिन होना चाहिए. गुरु महाराज ने नहीं बोला कि बैकलॉग अगले दिन क्लियर करो. प्रभुपाद नेवर सेड दैट कि बैकलॉग क्लियर करो अपना नेक्स्ट डे. That is a convenient step we take. And once we have taken that convenient step, I have failed the test. And because I failed the test comes again and again and again. And once I clear it, it doesn't come again. That situation will not come again. Or even if the situation comes, it becomes easy for me to handle that situation. है ना? So again, personal example से बोलता हूँ. Initial days of my office, and I was like, we were new to Bhakti. Our office party was in Ambe Valley, Lonavala. Ambe Valley, like वो Sahara city वगैरह वो जो अलग ही दुनिया है वो. And we had to leave very early in the morning, 6 o'clock वगैरह वगैरह. तो उससे पहले उठ के माला करने का नहीं था, हिम्मत उस समय नहीं थी, आज भी नहीं है. और जब तक वापस आए रात को तब तक टाइम हो गया था. एंड आई थॉट वी बोथ वर देयर इन वेरिटास एट दैट टाइम, सो वी ऑक्यूपाइड आवर सीट. हमने सब बस में कर लेंगे. बट बिकॉज ऑफ दिस वे आई स्टार्टेड गेटिंग नॉजियस, आई कुड नॉट चैंट. शी फिनिश्ड हर चैंटिंग इन द बस इटसेल्फ, पीछे की सीट पे बैठ के हम दोनों, और आई कुड नॉट चैंट. और फिर वहां पे जाके फिर हमारे कुछ तो सेमिनार थे, एंड देन पार्टी था, ये था वो था. उधर जाके क्या होने वाला है, ठीक है. रात को फिर हम लोग वहां से वापस चले 8-9 बजे. And then, you know, I again got into this nauseatic symptoms, तबीयत खराब. घर पे आए तब तक माला कोई 3-4 ही हुए थे. And this is like now again 12 o'clock in the night or more than that. मैं माला करने बैठा और बुरी तरह नींद आ रही है, मतलब बुरी तरह गिर रहा हूँ. एक माला हो रही है आधे घंटे में. आधे घंटे में एक माला हो रही है, और देखो 2 घंटा निकल गया, माला हुई है 4. हाँ. But that day something struck me कि पूरा दिन मैंने ये भोग में बिताया है. At least, you know, I should not leave it for tomorrow. I have never actually kept my rounds for tomorrow so far. So not saying as a proud, but I'm just expressing this. That day I decided कुछ भी हो जाए, फिर उठा चल के कैसे भी करके सुबह
4 पौने 5 बजे तक माला किया नींद में गिर करके, है ना। फिर अभी कोई कह सकता है कि अरे क्या फायदा, माला तो आपका अगले दिन ही हुआ ना, इससे अच्छा सो के उठ के अगले दिन कर लो। बात वो नहीं है, बात ये है कि दैट्स अ टेस्ट and I have to pass the test. Of course, at that time I did not have this intelligence of understanding it as a test or not, but I somehow thought of fulfilling this commitment कि सोऊंगा नहीं जब तक ये नहीं होगा। वो हो गया। फिर आपको आधा तो मैंने माला करते करते ही सो लिया था आधा माला के बाद में सो गया, जो भी हुआ फिर आगे। But then that point is that situation has never come in my life after that. So that I can express from my heart. Once I make a decision that I have to pass that test, I qualify, pass the test will not come again. Some other test will come. A higher test will come, not taste. Higher test will come. But ठीक है ना, वो तो फिर अब आगे तो बढ़ना ही है ना, हायर टेस्ट को आने दो। बट ये टेस्ट नहीं आएगा, ये टेस्ट मुझे पास करना है, कृष्णा और माया। आई हैव टू चूज एवरी डे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।